Hello dear students. In quantum physics, today's topic is solved examples on de Broglie wavelength. तो स्टूडेंट्स थोड़ा थियरी पार्ट हम देख लेते हैं. So what is de Broglie wavelength? So de Broglie scientist proposed that wavelength of wave associated with matter particle as lambda is equal to h upon mv. Means when particle is moving, then waves are associated with that particle and with these particles, and wavelength of these waves is called as de Broglie wavelength. तो इक्वेशन फॉर de Broglie wavelength is lambda is equal to h upon mv. यहाँ पे m मीन्स मास ऑफ पार्टिकल एंड v मीन्स वेलोसिटी. तो ये एक इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन हम देख लेते हैं. The de Broglie wavelength depends on kinetic energy of the matter particle. So here, suppose we are going to multiply and divide by 2m, then equation will be like this, that is p square upon 2m, and we can write p is equal to square root of 2me. Then equation of de Broglie wavelength is lambda is equal to h upon 2me. Now third equation for de Broglie wavelength is, it is for an electron. Means when electrons are moving in particular direction after application of potential, then equation is like this, lambda is equal to h upon p, which is equal to h upon square root of 2me. तो ये equation हमने पहले देखा ही है. Means E means kinetic energy, and this kinetic energy is due to application of potential. Means इलेक्ट्रॉन्स को जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव होते हैं, एंड इट इज एंड दैट पोटेंशियल वी कैन राइट इन दिस वे. हियर E इज इक्वल टू E इंटू V. मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ E एज E इंटू V. देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. हियर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, विच इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mev. Now students, here all are constants, means h is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34. m is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31. तो students प्लीज़ यहाँ पे नोट करो ये बात. यहाँ ये पावर है 10 raised to minus 31 है एक्चुअली, बट बाय मिस्टेक यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट हुआ है. Here also same thing, 1.6 into 10 raised to minus 19. तो ये भी minus 19 भी पावर ही है. So here means if we are going to substitute all these values, then except V, then equation becomes like this, 12.26 angstrom upon square root of V. So this is third equation. So in this way we can write all these equations in one box, that is lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon square root of 2me, and lambda is equal to 12.26 angstrom upon square root of v. तो एग्जाम्पल सॉल्व करते. तो पहला एग्जाम्पल देखो. हियर कैलकुलेट वेलोसिटी एंड de Broglie wavelength of a particle of energy 1 kilo electron volt. Given mass of alpha particle is equal to 6.68 into 10 raised to minus 27 kg. H is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second. So before solving example, remember, here write down all given things. Here value of energy is given, but it is given in electron volt, so convert it into joule. So here just by multiplying 1.6 into 10 raised to minus 19, we can obtain its value in joule. Now substitute value of H, which is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34, and substitute remaining values. So here mass is equal to 6.68 into 10 raised to minus 27. तो यहाँ पे देखो. So here also same thing happened, means the it is ये जो है ये पावर में नहीं आ रहा है यहाँ पे print. So you are just consider it. Same thing happened here, 10 raised to 3 and 10 raised to minus 19. So after substitution, equation becomes like this, 4.534 into 10 raised to minus 13 मीटर. सेकंड क्वेश्चन है यही एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है, वेलोसिटी एंड de Broglie wavelength. सो वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी फॉर्मूला इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p.
or lambda is equal to h upon v. If we are going to arrange this formula here in this way, that is v is equal to h upon m lambda, and substitute all values, that is m का वैल्यू जो है 6.68 इंटू 10⁻27 and value of lambda here we have calculated here, वही वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है and afterward answer will be 218.9 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड. सो आंसर यहाँ पे इस तरह से लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of 225 volts and 1 kg object moving with a speed of 1 meter per second. Comparing the result, explain why the wave nature of matter is not apparent in daily observation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मीन्स लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट फॉर एन इलेक्ट्रॉन. सो हियर at first we will write all given things. Potential difference given है, here potential difference is equal to 225 volt and speed of object भी यहाँ पे दिए है. तो formula here we will write formula of de Broglie wavelength but for an electron. तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था वही हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे. सो de Broglie wavelength of an electron lambda is equal to 12.26 angstrom upon square root of v. So just substitute value of 225 for v and solve it. Then equation answer will be 0.8173 angstrom. Now second question है here 1 kg object moving with speed of 1 meter per second. तो ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. तो ऑब्जेक्ट के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए इक्वेशन रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी. सो हियर आफ्टर सब्सटीट्यूशन आंसर इज लाइक दिस, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻31. So in this way here we obtain two equations but two answers, but one more question is there. Explain why the wave nature of matter is not apparent in daily observation. तो इसके लिए आंसर है कि यहाँ पे अगर आप लोग कंपेयर करेंगे मीन्स लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे इज द वेवलेंथ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस एंड दैट्स वाई हियर we are not able to see such a type of waves in our daily observations. So that answer also here we will note here, means the for an object wavelength is very small and therefore wave nature of matter is not apparent in daily life. So one more example is here. A particle has mass 1.157 into 10⁻30 kg and kinetic energy 80 electron volt. फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल. मीन्स यहाँ पे एनर्जी वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन एंड यूजिंग दिस फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो फॉर्मूला रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हेन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन देन यूज दिस फॉर्मूला एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me. So substitute all values, means the जो भी values given है here is the substitute value of mass, substitute value of E because value of E is given here, and convert this value of energy in joule. So finally here answer is 1.218 into 10⁻10 meter. Means de Broglie wavelength of particle is 1.218 into 10⁻10 meter. So students, one more example is there and this example here use here for you, means solve this example for practice. Here calculate kinetic energy of an electron whose de Broglie wavelength is 5000 angstrom. मीन्स काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है आप लोगों को. तो यहाँ पे जो भी गिवन थिंग्स है वो यहाँ पे नोट कर लो. यार ऑल्सो बाय मिस्टेक 10 का पावर यहाँ पे माइनस जैसे लग रहा है एंड हियर ऑल्सो सेम थिंग 10 का पावर -31 है बट -30
10 माइनस 31 ऐसा लग रहा है. So remember this correction. Now here make arrange equation for energy. तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एनर्जी के लिए इक्वेशन अरेंज करो and afterward you will get answer. So solve more examples in this way, and here you will if you will do practice, then you can solve any type of example. Okay, thank you.